Yeah. Okay. So, good evening to all the online participant students. We had completed revisionary class for investment decision, for dividend decisions, and for leverages as well. Today, we are gonna quickly revise through all the concepts of the chapter working capital management. So, let me just share my screen. I hope my screen is visible to you all. So, yeah, what is working capital management? Sir, simple na. It is nothing but managing your working capital. How much amount of working capital is needed in the business? Working capital is needed in the business. इस चैप्टर से हम सीखेंगे. So can I say how much amount you need to invest in the working capital? That we will cover in this chapter, correct? So this chapter comes under the investment decision of financial management. Investment decision investment decision was all about answering two questions: where to invest and how much to invest. So where to invest mein we already saw that whether to invest in the project or not. So that was all about capital budgeting. क्या हमें प्रोजेक्ट में बिजनेस में नए मशीन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, दैट वी लर्न इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, कैन आई से फिक्स्ड असेट्स cannot work on its own. In any business organizations, fixed assets अपने आप business नहीं चला देगा. Let me give you a quick example. Let's say you are planning to start a new manufacturing facility, a new manufacturing plant. ठीक है? So, to start a new manufacturing unit, can I say you will need a land? एक जगह चाहिए जहां पे हम फैक्ट्री सेटअप करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन दैट लैंड कैन आई से आई विल सेट अप अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन दैट पीस ऑफ लैंड, करेक्ट? अब फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर कैन आई से आई विल प्लेस ऑल द मशीनरीज, जो जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूजफुल मशीन्स होंगे सारे आई विल सेटअप. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन वन कॉर्नर ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग आई विल रन एन ऑफिस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह सब होगा. सो इन शॉर्ट, माय क्वेश्चन टू यू, क्या ये सारे असेट्स में इन्वेस्ट करने पे इज योर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्टेड? मीन्स आपका जो मैन्युफैक्चरिंग, लेट्स से यू आर प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर चिल्ड्रन अपैरल्स, चाइल्ड वेयर, तो क्या बस ये लैंड में पैसा लगाने से, फैक्ट्री बिल्डिंग मशीन ऑफिस में पैसा लगाने से क्या आपका चिल्ड्रन वेयर, चाइल्ड वेयर मैन्युफैक्चर हो जाएगा? विल यू बी एबल टू मैन्युफैक्चर द किड्स वेयर? Absolutely not. Why? Because fixed assets cannot work on its own. Can I say, for smooth working of fixed assets, for smooth functioning of fixed assets, we need additional fund, and that additional fund is nothing but working capital. Are you getting this? ये सिर्फ फैक्ट्री में मशीन लगाने से आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा. वो मशीन में आपको इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल्स डालना पड़ेगा. फिर वो प्रोडक्ट पे कुछ लेबर्स काम करेंगे, एंड देयर वुड बी सम अदर ओवरहेड्स इनकर्ड एज वेल. आर यू गेटिंग दिस? सो जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन दिस फिक्स्ड असेट्स यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट योर बिजनेस. आपका बिजनेस, कोई भी बिजनेस उठा लो, सिर्फ फिक्स्ड असेट में इन्वेस्ट करने से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता. यू नीड एडिशनल फंड्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स. ये फिक्स्ड असेट्स को स्मूथ रनिंग के लिए यू नीड एडिशनल फंड्स, एंड दैट एडिशनल फंड इज नथिंग बट वर्किंग कैपिटल. ठीक है? सो वर्किंग कैपिटल इज द फंड्स दैट यू नीड फॉर रनिंग डे टू डे बिजनेस. Are you following? So working capital, this you have already learned. So इस चैप्टर में ओवरऑल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमें सीखना क्या है? So we have already learned that working capital
is nothing but current assets less current liabilities, correct? Yes or no? Working capital is nothing but current assets less current liabilities. तो नाउ सी ना, चेक ना कि करंट असेट्स के कंपोनेंट्स क्या क्या है एंड करंट लायबिलिटीज के कंपोनेंट्स क्या क्या है. Are you getting this? Just check what are the different individual components of current assets. If you are able to manage those individual components, those specific components of current assets and current liabilities, your working capital management is done. Understood? So current assets mein ideally in any business organization, if it is into manufacturing industry, can I say current assets? Yeah, correct. स्टॉक होंगे, डेटर्स होगा, कैश होगा, ये कैश बैंक होगा, ये तीन तो होंगे ही होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर मे बी सम प्रीपेड एक्सपेंस, यस और नो, or some other short term investment as well, but these are the common current assets that you will see in all the business organization into manufacturing industry. Current liability में क्या होगा? Can I say there would be creditors which we call accounts payable. Outstanding expense भी होंगे, means accrued expense is accrued but not paid yet, correct? So if you are able to manage these specific components, or I would say specific line items, then your working capital management is done. Are you following? Are you able to process what I'm trying to say? Understood? So working capital management is the main branch, is the topmost branch. उसके अंदर कैन आई से इन्वेंट्री मैनेजमेंट वुड बी वन सब ब्रांच. उसके अंदर डेटर्स मैनेजमेंट यानी कि रिसीवेबल्स मैनेजमेंट वुड बी अनदर सब ब्रांच. कैश एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट वुड बी अनदर सब ब्रांच. Likewise, payable management also would be a sub branch of the main branch of working capital. Understood? तो ये सारे चैप्टर्स, सब चैप्टर्स बोलो, सब ब्रांच बोलो, सब कॉन्सेप्ट्स बोलो, ये भी हमें इस चैप्टर में हमने सीखा हुआ है. आर यू फॉलोइंग दिस? एंड क्रेडिटर्स मैनेजमेंट. बट ICAI सेड कि FM में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. वाई? स्टॉक मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है. वाई? ये लेना देना नहीं है ऐसा नहीं बोला, इंस्टीट्यूट ने बोला है कि दिस स्टॉक मैनेजमेंट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर कॉस्टिंग पेपर, दैट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मटेरियल कॉस्टिंग, इन्वेंट्री कॉस्टिंग. तो वापस वही चीज दूसरी बार FM में पढ़ने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई ICAI हैज रिमूव्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट फ्रॉम FM सिलेबस. लेना देना नहीं है ऐसा नहीं बोला है. ठीक है? Understood? So in this working capital management branch, we would be learning what all concepts. So first, number one, how to estimate the working capital amount. ये आपने सीखा होगा. By this what I mean कि यहाँ पे हमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा. How much capital would be needed for working capital purpose? ये question mark is our job. ये to find this question mark, to assign the value to this question mark is our job. So first job is to learn how to estimate the working capital amount. Working capital calculate कैसे करते हैं वो सीखेंगे, या not सीखेंगे but you have already learned because this is revisionary class. Second, there is a separate concept called working capital operating cycle. Working capital operating cycle. What is working capital operating cycle? Don't worry, I will help you in revising this concept also thoroughly. फिर अब हम आते हैं सब कंपोनेंट्स में, सब ब्रांचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल. वी विल लर्न हाउ टू manage our receivables. We will learn how to manage our cash and bank balance. So what should be our optimum cash and bank balance at any given point in time? वो इस चैप्टर से सीखेंगे.
Yeah, sorry, not the chapter, but a sub concept. What should be the future cash budget that we will learn in this chapter? Means let's say मैं आपको बोलूं कि आज से 8 महीने बाद what would be my cash bank balance? Give me an estimate. तो उसके लिए कहना है I need to prepare a budget, a cash budget. I have to include all the cash inflows. I have to deduct all the cash flows, and after that I can give you the estimate cash bank balance after 8 months. Understood? So वो भी इस चैप्टर में हमने सीखा हुआ है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेबल्स मैनेजमेंट. पेबल्स मैनेजमेंट में हमने ये सीखा था कि क्या कंपनी को क्रेडिटर से डिस्काउंट अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. कंपनी का फायदा किसमें, वेदर टू अवेल द डिस्काउंट एंड मेक अर्ली पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, और वेट till the last date and pay on the last date and don't avail the discount. Are you following? Are you able to process? पेबल्स मैनेजमेंट में हमने यही सीखा था कि क्या कंपनी को सन्ड्री क्रेडिटर से जो डिस्काउंट मिलता है वो अवेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अंडरस्टूड? सो दिस ऑल इज अबाउट डिसीजन मेकिंग as far as working capital management is concerned. Understood? Now let's quickly revise this all topics one by one so that all the concepts of this chapter gets brushed up very quickly. Estimate of working capital. Let's start with estimate of working capital. Very, 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 very important. And ideally, I feel every attempt में इसका एक क्वेश्चन तो आता ही है. Or not in every attempt, but at least the ratio would be 3:5. Means out of every 5 attempts, 3 बार तो पूछा ही होगा as per the past trends. Understood? So working capital estimate. See, just focus on this word, estimate. Now my question to you, estimation past का होगा कि future का होगा? बोलो, हम estimate past history का करते हैं कि फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर का करते हैं? कैन आई से एस्टिमेशन इज ऑलवेज ऑफ फ्यूचर डेटा, इज ऑलवेज ऑफ फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज. अंडरस्टूड? आने वाले साल में. सो माइंड दिस वेरी केयरफुली. हमें जो भी वर्किंग कैपिटल का लेट से इट कम्स टू 5 लाख, तो ये 5 लाख हमें आने वाले साल में वर्किंग कैपिटल लगेगा. दिस इज दैट 5 लाख. आर यू फॉलोइंग? 5 लाख लग गया, 5 लाख वर्किंग कैपिटल में यूज हो गया, ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं. आने वाले साल में व्हाट वुड बी माय वर्किंग कैपिटल, तो इट वुड बी 5 lakhs. अंडरस्टूड? सो यू हैव टू बी क्लियर विद ऑल दिस थिंग्स कि एस्टिमेशन इज ऑलवेज ऑफ फ्यूचर, नॉट ऑफ पास्ट. ठीक है? सो कैन आई से अच्छा ओके सर यू आर राइट, हम एस्टिमेशन फ्यूचर का करेंगे. ए नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इज फ्यूचर सर्टन की अनसर्टन? फ्यूचर में आर यू 100% श्योर? What are you contemplating? मीन्स आप जो दिमाग में सोच रहे हो कि फ्यूचर में मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरा बिजनेस ऐसा ग्रो होना चाहिए, सेल्स इतना होना चाहिए, आर यू 100% श्योर कि वो होगा ही होगा? नॉट, बिकॉज इट इज फ्यूचर. फ्यूचर इज वेरी अनसर्टन. ये आने वाले 5 मिनट में हमारे साथ क्या होगा, दैट ऑल्सो वी डोंट नो. सो दैट इज द अनसर्टनिटी ऑफ द फ्यूचर. Understood? So as far as FM is concerned, as far as financial management is concerned, जहां uncertainty की बात आएगी ना, वहां we will use assumptions. FM का this is a very standard rule. Wherever there is uncertainty, we have to take a base of certain assumptions. Understood? So assumption number 1 of this chapter. All activities accrue evenly throughout the year. All activities accrue evenly throughout the year. इसका मतलब क्या? आपने वर्किंग कैपिटल के बहुत सारे क्वेश्चन में ये लास्ट में ये लाइन, ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा, बट ऑलवेज यूज टू इग्नोर because you used to think यार it is none of my business. ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन है, but no, it is very important information.
What does this mean? All activities accrue evenly throughout the year. It means कि let me give you an example. Let's say पूरे साल का सेल्स, आने वाले पूरे साल में आई एम एस्टिमेटिंग सेल्स ऑफ 12 लाख. तो बाय दिस स्टेटमेंट आई मीन कि पूरे साल में अच्छा ओके 12 लाख होने वाला है, तो जैन में 1 लाख होगा, फेब में 1 लाख होगा, मार्च में 1 लाख होगा, अप्रैल में 1 लाख होगा, अक्टूबर में 1 लाख होगा, दिसंबर में 1 लाख होगा. मीन्स every month would have same sales amount. This is what this statement means. All activities accrue evenly throughout the year. अच्छा, आपका परचेज 6 लाख है, तो एवरी मंथ 50,000 का ही होगा. आर यू फॉलोइंग दिस? इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड कि आपका सेल्स एवरी मंथ सेम हो? नो, practically it is not, but with the help of these assumptions, yes. Because why? We are estimating the future, and future is uncertain, so we have to take a base of some assumptions. Are you following this, everyone, students? Understood? So can I say अच्छा अगर पूरे जैन में 1 lakh is the sales, तो can I say per day would be 1 lakh divided by 30? Yes or no? So per day again sales would remain same. Are you following? So at any given point in time, so Feb में per day again sales would remain same. March में again per day sales would remain same. Are you following? So आप कोई भी साल की डेट उठा लो, 1 मार्च, रैंडम डेट्स, 15 अक्टूबर, 2 नवंबर, उस दिन का सेल्स सेम ही होगा. मीन्स कोई भी डेट में आप देखोगे तो सेल्स अमाउंट वुड बी सेम. Are you following? Why? Because all activities accrue evenly throughout the year unless otherwise specified. Unless otherwise specified. हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ अलग स्पेसिफाई किया हुआ है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी गई है, तो दिस assumption will not hold true. We will have to go with that specific information. Understanding? But in absence of any other specific information, this was a very important assumption of this chapter. All activities are spread or accrue evenly throughout the year. इसका मतलब क्या पता है? जैसे सेल्स इज सेम ऑल द डे ऑफ द ईयर, वैसे आपका स्टॉक भी सेम रहेगा. आर यू फॉलोइंग दिस स्टूडेंट्स? जैसे परचेज पर डे और परचेज ऑफ एनी डे is same throughout the year. Sales is same. Sales amount per day is same throughout the year, across the year. वैसे stock amount will also remain same across the year. कोई भी दिन उठा लो, stock की value same रहेगी. Why? Because we are taking help of these assumptions. Are you following? So opening stock and closing stock amount will remain same. Are you following this, everyone? हाँ, but focus on this unless otherwise specified. If question gives some specific information or some specific hints, then don't apply this assumption. Go and follow that specific information. ठीक है? So this was very important assumption of this chapter, जो हमेशा सब इग्नोर करते हैं. But I feel the note on most of the question यही नोट होती है, that all sales and other activities are spread evenly throughout the year. उसका मतलब I just explained you. Correct? Next assumption, हम जो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल करेंगे ना, वो आने वाले एक साल में कितना अमाउंट चाहिए वर्किंग कैपिटल का, दैट वुड बी आवर एस्टिमेशन. आर यू फॉलोइंग? वी वुड बी एस्टिमेटिंग आवर वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द कमिंग ईयर, ऑफ द कमिंग एंटायर ईयर. मीन्स पूरे साल में, आने वाले साल में मुझे कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, तो दैट अमाउंट वी वुड बी एस्टिमेटिंग हियर. बट प्रैक्टिकली यू नो व्हाट हैपेंस? प्रैक्टिकली क्या होता है, ये वर्किंग कैपिटल की अमाउंट बिजनेस फंडिंग लेती है बैंक से. बैंक has some facilities called working capital facility, cash credit facility, bank OD facility. So these all are nothing but one and the same. Like they are very similar.
as far as their features are concerned. It is nothing but your funding your day-to-day business operations की requirement. Are you following? So bank never funds your working capital needs of entire year. बैंक क्या बोलेगा कि आपका आने वाले 3-4 महीने में कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बताओ, आई विल फंड दैट, आई कैन नॉट फंड यू फॉर एंटायर ईयर. आर यू फॉलोइंग? सो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपका कैलकुलेशन would be restricted to 3 to 4 months, or I would say maximum 6 months. Bank never funds your working capital needs for the entire year. Are you following? But since we are in academics, we have to take certain assumptions. So we are calculating working capital needs for the entire coming year. Understood? Last but not the least, you would have seen in your regular virtual classes कि हमने working capital management में जितने भी सम किए वो सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिजनेस के सम्स थे. मीन्स वी आर एस्टिमेटिंग द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ ऑल दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर कवर्ड अंडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और अंडर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. आर यू फॉलोइंग? हमने एक भी सम ट्रेडिंग इंडस्ट्री वाला नहीं देखा है, ना ही की सर्विस इंडस्ट्री वाला है. तो वाई दिस ऐसा क्यों? तो इंस्टीट्यूट का ICAI का इज अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल एंड लॉजिक दैट ऑफ द 3 इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ एस्टिमेटिंग द वर्किंग कैपिटल इज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सबसे तीनों में से सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क किसका है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है. सो अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एस्टिमेशन सीख लिया, हाउ टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो सीख लिया, तो ट्रेडिंग एंड सर्विस तो आपको आ ही जाएगा. अंडरस्टूड? फॉलोड? सो कहना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करता हूं तो अगेन स्टॉक वुड बी ऑफ 3 टाइप्स, RM, WIP एंड FG. ठीक है? Understood? Because manufacturing industry businesses are most complex. Then the business is covered under in trading or service. So institute said that if you are able to calculate working capital estimation or working capital amount for manufacturing industry, then it is easy for you to calculate for trading and service industry. ठीक है? So आपने जितने भी सम देखे होंगे वो सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सब में स्टॉक RM होता होगा, FG होता होगा, WIP होता होगा. Understood? So once the assumptions were covered, then what you had learned in the chapter? Then you had learned the format of estimation of working capital. Format of estimation of working capital needs. So format was again very simple. Working capital क्या है? Just see the format. What I do, just see. It is very simple, very smooth and simple. Can I say it is nothing but current assets, yes or no, और लेस करंट असेट्स में से हम क्या माइनस करते थे? तो करंट लायबिलिटीज. सो फर्स्ट just write the heading of current assets and current liabilities. I am trying to explain you the easy flow of preparing the format. अब करंट असेट्स के उसके लाइन आइटम्स में आ जाओ. करंट असेट्स में कहना है इसे नंबर 1 वुड बी स्टॉक. ठीक है? नंबर 2 would be debtors. Number 3. Understood? So the total of the current assets, उसको हम क्या नाम देते थे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. जैसे टैक्स में होता था ना, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से डिडक्शंस माइनस करो तो वी विल गेट नेट टोटल इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम. वैसे ही ग्रॉस वर्किंग कैपिटल less deductions in the form of current liabilities, you will get net working capital. Followed? So gross working capital is nothing but total of current assets. उसमें से current liability माइनस करें तो आइडियली current liability में कहना इसे the most common
करंट लायबिलिटीज, पेबल्स, क्रेडिटर्स एंड ज्यादा से ज्यादा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यस और नो, जो अदर करंट लायबिलिटीज में आता था. So once we subtract current liability from current assets, we used to get net working capital. करेक्ट. अच्छा, स्टॉक बाकी रह गया. स्टॉक में कैन आई से इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्टॉक इज ऑफ RM, स्टॉक इज ऑफ WIP एंड स्टॉक इज ऑफ FG. करेक्ट, तीन टाइप के स्टॉक. सो जस्ट सी आई एम ब्रेकिंग डाउन द फॉर्मेट. फर्स्ट करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, फिर करंट असेट्स के इंडिविजुअल स्पेसिफिक कंपोनेंट्स लिख दिए, करंट लायबिलिटीज के इंडिविजुअल स्पेसिफिक कंपोनेंट्स लिखे. अच्छा, करंट असेट में स्टॉक तीन टाइप के, तो सब कंपोनेंट स्टॉक के भी लिख दिए. सो दिस इज हाउ यू शुड फॉलो द सॉल्यूशन, दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच इन सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. करेक्ट. अब WIP में भी फर्दर कहना है वर्क इन प्रोसेस. तो मेरे प्रोसेस में जो गुड्स बन रहा है इन द मशीनरी, उसमें रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा, उसमें लेबर काम कर रहे होंगे एंड उसमें अदर ओवरहेड्स एलोकेट हुए होंगे. करेक्ट. सो WIP में फर्दर 3, क्योंकि उसमें RM यूज हुआ होगा, रॉ मटेरियल डाला होगा. सो देयर वुड बी सम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल इनसाइड द प्रोसेस. फिर उस प्रोसेस में कुछ लेबर काम कर रहे होंगे, तो उनका कॉस्ट भी आएगा एंड अदर ओवरहेड्स दैट आर टू बी एलोकेटेड टू WIP. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मेट. एंड नेट वर्किंग कैपिटल में लास्ट में वी यूज टू ऐड सेफ्टी मार्जिन और प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी. वाई सेफ्टी मार्जिन ऐड करते थे? कहना है बिकॉज ये जो अमाउंट आता था ना यहाँ पे, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, सॉरी, ये जो नेट वर्किंग कैपिटल अमाउंट आता था ना, दैट वाज एन एस्टिमेटेड फिगर. सो वी आर नॉट श्योर कि हमें यही अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी. वी आर नॉट 100% श्योर, दिस अमाउंट में डिविएट. सो ऑन अ सेफर साइड वी यूज टू ऐड सेफ्टी मार्जिन, कि चलो हमने एस्टिमेट किया 10 लाख, बट वी आर नॉट श्योर कि 10 लाख की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज दिस इज एन एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. सो दिस माइट फ्लक्चुएट देन your estimation, the actuals might deviate from the estimation. So to be on a conservative basis, हम क्या करते थे, कुछ परसेंटेज सेफ्टी मार्जिन ऐड कर देते थे. Followed everyone? So safety margin was added. Safety margin was added, and then the balancing figure we termed it as working capital required, working capital raised, or working capital required. Understood the format? So format is very simple. It is nothing but breakdown of current assets and current liabilities only. ठीक है? Followed till here. Any doubts, any concerns? I hope it is getting very smooth and you are able to process what is being taught over here. Now our next task is to fill this table. अच्छा, हमने RM तो लिख दिया. RM, how to calculate RM, how to calculate WIP, how to calculate FG, how to calculate debtors. Correct? So what was the formula for this individual components of current assets and current liabilities? Can I say RM was based, RM, raw material, is based on raw material consumption? Yes or no? So the formula was raw material consumed into RM holding period divided by 12, 365, 52. Correct? यही formula थी. Are you able to recollect this formula? Why 12, 365, 52? If you want to calculate in months, तो 12. If you want answer in days, तो 365. And if you want answer in weeks, तो 52. Understood? Everyone? Correct? फिर अगेन यहाँ पे कहना है WIP is nothing but your cost of production. WIP जैसे RM is based on raw material consumption, entire WIP is nothing but it is based on cost of production. जैसे FG है
तो FG is finished goods, तो it is based on cost of goods sold, बिकॉज हम गुड्स कौन सा बेचेंगे जो फिनिश्ड होगा, जो कंप्लीट होगा. सो कहना है FG इज बेस्ड ऑन COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. RM रॉ मटेरियल है तो इट इज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल कंजम्पशन. तो कहना है WIP means in production, it will be based on cost of production. Work in production means it will be based on cost of production. Yes or no? Are you getting this? So can I say this 3 is nothing but RM plus labor plus overhead is nothing but your cost of production only. Followed everyone? So RM, can I say the formula would be raw material cost into, now since we are calculating WIP, we will take WIP holding period. WIP holding period means process में कितना टाइम लगता है. How much time the goods are there in the process, in the production. Are you following? So यहाँ पे students do mistake. ये यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट ले लिया बट फिर मल्टीप्लाई करते RM होल्डिंग पीरियड से. नो, वी आर कैलकुलेटिंग WIP. So we have to take WIP holding period. Followed? Again divide by 12, 365, 52. Correct? फिर लेबर. So can I say labor will be labor का cost into WIP holding period. Again divide by 12, 365, 52. And overheads. तो overheads भी हम WIP holding period से multiply करेंगे. Divide by 12, 365, 52. Correct? So this is how we used to calculate WIP. अच्छा, FG कैसे कैलकुलेट होता है? FG is calculated on COGS. करेक्ट? फिनिश्ड गुड्स. तो फिनिश्ड गुड्स का कॉस्ट क्या होगा? कैन आई से इट वुड बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू FG होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12, 365, 52. अंडरस्टूड? बट नाउ माय क्वेश्चन टू यू. देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. I know you have already learned this in your regular classes, but still I want to revise this because I feel this is very important as far as conceptual understanding is concerned. देखो, can I say WIP is nothing but based on cost of production? Yes or no? Correct? So cost of production में क्या क्या कॉस्ट आएंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन will include RM cost, will include labor cost, will include overheads. Correct? Likewise, COGS also includes these 3 costs only. RM cost plus labor cost plus overheads. Are you following? COGS का bifurcation करे तो it is nothing but RM plus labor plus overheads. COGS का टोटल भी RM plus labor plus overheads. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन WIP भी RM plus labor plus overheads. तो दोनों में अंतर क्या, डिफरेंस क्या? एंड वी नो डिफरेंस तो है. वन इज WIP, वन इज वर्क अंडर प्रोसेस एंड वन इज कंप्लीटेड गुड्स. करेक्ट? वर्क अंडर प्रोसेस मींस लेट्स से आई एम इनटू बिजनेस ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चरिंग. तो फिनिश्ड गुड्स मींस कंप्लीट शर्ट रेडी फॉर सेल. बट WIP मींस कहना है अभी उसके बटन्स लगाने बाकी होंगे, अभी ये कॉलर लगाना बाकी होगा, पैकेजिंग बाकी होगा. दिस इज WIP. फॉलोड? सो कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए दोनों में, WIP में और FG में. बट यहाँ पे स्टेटमेंट देखते, ये फॉर्मेट देखते हैं तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है. आप बोलो FG इज डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या WIP को बोलो इट इज डिपेंडेंट ऑन COGS. It looks one and the same only. Why? Because cost of production का bifurcation and COGS का bifurcation is same. Are you getting what I'm trying to say? Everyone, those online participants, are you able to understand what I'm trying to say? कि WIP का bifurcation और COGS का bifurcation, it is one and the same. तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ना कि WIP is based on COGS, FG is based on COP, cost of production, because the amount is same. Everyone following? So where is the difference?
वी नो कि डिफरेंस तो होना ही चाहिए बिकॉज एफ जी इज कंप्लीटेड प्रोडक्ट एंड डब्ल्यू आई पी इज हाफ इनकम्प्लीट प्रोडक्ट. सो डिफरेंस है यहां पे देखो. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एफ जी कैन आई से इट इज 100% complete in all aspects. Are you following? FG is those goods which is 100% complete in all aspects. But WIP is semi-finished goods. It is not 100% complete. Following everyone? So यहाँ पे हम percentage completion से multiply करते थे. If you remember. So the logic of multiplying it with percentage completion is this. Are you following? Because WIP and FG both in meaning are different. One is semi-finished, incomplete product, one is complete product. So दोनों में percentage completion difference होना चाहिए. Are you following? That's why we used to multiply percentage completion as far as WIP was concerned. Understood? Otherwise ये हम 100% करें ना, ये भी 100% और FG को भी 100% करें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा as far as calculation is concerned. Following? Followed? So now my question to you. If question gives specifically gives percentage completion, let's say question says कि raw material is 90% entered into process, तो हम यहाँ पे 90 लिखेंगे. And if they say that labor and overheads have been incurred by 60%, तो यहाँ पे हम 60-60 लिखेंगे. Are you following? सो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक परसेंटेज कंप्लीशन दिया है तो वी यूज दैट परसेंटेज व्हाइल सॉल्विंग. बट क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट परसेंटेज कंप्लीशन. Then there is standard assumption that we used to follow for all the question. What was it? कि raw material would be 100% introduced in the process. Means जितने भी raw material थे वो सारे प्रोसेस में डाल दिए. Labor and overheads have done 50% of their job. Are you following? Means शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो शर्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सारा प्रोसेस में डाल दिया. बट अभी बटन बाकी है, कॉलर बाकी है, स्लीव्स बाकी है, तो कहने से लेबर हैज नॉट डन देयर जॉब कंप्लीटली एंड कुछ अदर ओवरहेड्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं. आर यू फॉलोइंग? सो दैट्स व्हाई द स्टैंडर्ड असम्पशन इज 100-50-50. फॉलोड एवरेज, वी आर टेकिंग द एवरेज. हाँ, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर स्पेसिफिक परसेंटेज दिया है तो ये स्टैंडर्ड असम्पशन नहीं लेना है, गो विथ स्पेसिफिक परसेंटेज कंप्लीशन. अंडरस्टूड? So the difference between WIP and FG lies in percentage completion as far as this chapter is concerned. Otherwise WIP भी RM labor overheads पे based है, FG भी RM labor overheads पे ही based है. Followed? हाँ, this might be different. बट मान लो सेम हुआ तो FG होल्डिंग पीरियड एंड WIP होल्डिंग पीरियड, आपका आंसर सेम आएगा. अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई द डिफरेंस लाइज ओवर हियर इन परसेंटेज कंप्लीशन. ठीक है? सो एस्टिमेशन कैलकुलेशन के लिए फिर आप एक कॉस्ट स्टेटमेंट भी बना देते. कॉस्ट स्टेटमेंट इन योर वर्किंग नोट. व्हाट वाज कॉस्ट स्टेटमेंट ऑल अबाउट? इट वाज ऑल अबाउट योर कॉस्ट शीट दैट यूज्ड टू प्रिपेयर इन कॉस्टिंग. उसमें हम रॉ मटेरियल्स का कंज्यूम का कॉस्ट लिखते थे, लेबर का कॉस्ट लिखते थे, देन वी यूज्ड टू ऐड फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. करेक्ट? जो द रिजल्टेंट फिगर इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और COGS. फिर इसमें हम एडमिन एक्सपेंस ऐड करते थे, इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट. सेलिंग एक्सपेंस ऐड करते थे, तो हमें क्या मिलता था? कॉस्ट ऑफ सेल्स, COS. इसमें हम प्रॉफिट ऐड करते थे एंड हमें मिल जाता था सेल्स. करेक्ट? दिस वाज द फॉर्मेट. दिस फॉर्मेट गिव्स यू अ बेस टू सॉल्व और टू कंप्लीट दिस एस्टिमेशन का टेबल. ये एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. अब मान लो मुझे इसमें RMC की अमाउंट चाहिए, तो RMC की अमाउंट में कहां से ढूंढता था? तो ये कॉस्ट स्टेटमेंट बना के ढूंढता था. मुझे WIP के लिए लेबर चाहिए, तो ये लेबर में कहां से ढूंढता था? तो ये कॉस्ट स्टेटमेंट से ढूंढता था.
मुझे एफजी के लिए सीओजीएस चाहिए, तो सीओजीएस कहने से कॉस्ट स्टेटमेंट से मिलेगा आपको. सो दिस स्टेटमेंट और वर्किंग नोट यूज टू प्रिपेयर so that you can fill up the values in your original working capital table. Correct? Now, next thing. Estimation of working capital can be done or can be solved by two ways. One is total basis. One was total basis and one is cash cost basis. What is the difference between two? I hope you are familiar with these terms. Total basis, cash cost basis. तो दोनों में अंतर, what is the key difference between two methods of working capital, total basis and cash cost basis? Try. सोचो. Yes, online participants. Just a second, I am having a sip of water. Puja, depreciation. Okay. Apart from depreciation, any other difference? You are correct. Depreciation is one of the key difference. इसके अलावा कोई और difference? One more difference. See, cash cost basis. Focus on the word cash and focus on the word cost. Correct? It means under cash cost basis of working capital estimation, we will include only cash expenses. मतलब कि नॉन कैश एक्सपेंस जो भी है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसकी इफेक्ट हम निकाल देंगे. सर कैश कॉस्ट नॉन कैश एक्सपेंस तो सर आइडियली डेप्रिसिएशन ही होगा. तो सर यहाँ पे टेबल में डेप्रिसिएशन तो आपने कहीं लिखा ही नहीं है, आपने एक्सक्लूड ही तो कर दिया. बट कहना से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगा. A depreciation on your machinery, depreciation on your plant. Can I say that is what? Manufacturing overheads, ना? So वो यहाँ पे included होगा. So if you are following cash cost basis, तो हमें RMC include करना है, because RMC is a cash cost. आज नहीं तो कल हमें कैश में पेमेंट करना है उसका. Labor is a cash cost, so you will include that. Overheads you will include, but don't include depreciation if you are following cash cost basis. अच्छा टोटल बेसिस है तो सब इंक्लूड होगा सारा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? वाई? बिकॉज डेप्रिसिएशन में आपका अमाउंट ब्लॉक नहीं होगा. आर यू गेटिंग दिस? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. इट इज नॉट योर अमाउंट ब्लॉक्ड इन द बिजनेस. Understand? And we want to calculate what is the amount blocked in the business so that we can ask to the bank for funding. Are you following? So हम बैंक के पास जाएंगे तो क्या मुंह उठा के जाएंगे? हम यही मुंह उठा के जा सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉक हुआ पैसा है वो फंड करके दे. We cannot say to the bank, hey, depreciation is also my cost. भले मेरे जेब से गया नहीं है फिर भी फंडिंग दे मुझे. Understood? That's why we excluding cash cost basis. So depreciation is excluded. Admin आज नहीं तो कल आपको पेमेंट कैश में ही करना है. Again, if there is some depreciation in admin expense, then you exclude that. ठीक है? But ideally, in most of the practical problems, there were no depreciation included under admin. ठीक है? Selling आज नहीं तो कल आपको कैश में ही पेमेंट करना है, so include that. So cost of sales. Now, very important. Is profit my cost? See, नाम में ध्यान दो. कैश कॉस्ट बेसिस only include the cost, and that too only those costs which are paid in cash or which will be paid in cash. So is profit my cost? Tell me. Can I say profit is not your cost? Profit is something over and above your cost. Are you following? So हम कैश कॉस्ट बेसिस में प्रॉफिट को भी एक्सक्लूड करते हैं. एक्सक्लूड मींस कहना है से हमारा डेटर्स, आइडियली डेटर्स इज बेस्ड ऑन सेल्स इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 12, 365, 52. बट इफ यू आर फॉलोइंग cash cost basis, can I say debtors will be based on cost of sales?
instead of sales. Understood everyone? ACP, ACP is nothing but not ACP Pradyumna. This is average collection period. Profit also excluded. Why? Because we are only concerned with cost and profit is something over and above your cost. So उसका कोई स्थान इस चैप्टर में नहीं होगा if you are following cash cost basis system. ठीक है? So in that case, debtors now will not be based on sales. Why? Because sales में तो profit element भी आ गया. That's why whenever cash cost basis question was there, आपने देखा होगा तो debtors cost of sales में value होता था. Understood? Cash and bank balance was the actual amount and prepaid expense. Other current expense में अगर कुछ prepaid है, so the formula was expense amount into the months they are prepaid. Yes or no? Divide by months बोलो या days बोलो या weeks बोलो. Divide by 365 52 into months, days, weeks prepaid. Divide by 12 365 52. Are you following this students? फॉर्मूला कैसे बन रही है, कहां से डिराइव हो रही है, वैल्यू कहां से उठाना, ये सब समझ रहा है. You have already learned this. Just a quick recap. Now next is creditors. Can I say creditors से मैं FG नहीं खरीदूंगा? I am into manufacturing business. So my purchase from creditors would be raw materials. Understood? And we multiply it with by average payment period or the credit period allowed by suppliers to me. ठीक है? Divide by 12, 52, 365. अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता था, तो एक्सपेंस इंटू आउटस्टैंडिंग मंथ्स बोलो, डेज बोलो, वीक्स बोलो, डिवाइड बाय 12, 52, 365. Followed? So for how much months the expense is lagging? Lagging means outstanding. Lag word आपने बहुत बार देखा होगा in this chapter. Lag is nothing but outstanding. Lag means हम पीछे चल रहे हैं, दुनिया से पीछे चल रहे, दैट इज लैग. सो लैग मींस पीछे चल रहे, मींस एक्सपेंस हो गया है बट पेमेंट बाकी है, पेमेंट अभी पीछे चल रहा है. Followed everyone? So this was a quick revision of how to estimate the working capital amount. How to estimate, उसमें हमने फॉर्मेट सीखा, उसमें हमने assumptions का रिवीजन किया, फॉर्मेट की फॉर्मूलास का रिवीजन किया. फॉर्मेट में जो वैल्यूज उठानी है वो कॉस्ट स्टेटमेंट से उठाएंगे, तो कॉस्ट स्टेटमेंट का फॉर्मेट रिवाइज किया एंड वी रिवाइज्ड ऑन द टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग द वर्किंग कैपिटल, दैट इज टोटल बेसिस एंड कैश कॉस्ट बेसिस. अंडरस्टूड? एनी डाउट स्टिल हियर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स? आपको कोई डाउट है यहां तक? इफ नॉट आई विल प्रोसीड विद क्वेश्चन ऑन दिस सो दैट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए. Are you all able to process? Okay. Okay, no doubts. Then let's quickly solve question of RTP Jan 26. I guess आपका अटेम्प्ट Jan 26 ही है, तो RTP में जो वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन पूछा है उसका रिवीजन करते हैं. So I guess in your RTP question is on case scenario. Working capital is asked, not a descriptive question but under case scenario. But हमें case scenario हो या descriptive question हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें question solve करने से मतलब है. ठीक है? PPW Limited is a mid-size manufacturing company producing household appliances for the Indian market. With competition heating up, company's management is becoming increasingly conscious about liquidity management and efficient use of working capital. During the last financial year, company recorded annual sales of 48 lakhs, offering its customers a 3 months credit period to encourage bulk orders. So how much is the average collection period? Can I say it is 3 months?
आई एम गिविंग 3 months क्रेडिट टू माई कस्टमर्स, मीन्स आज सेल हुआ तो मैं उसका कलेक्शन 3 महीने बाद करूंगा. सो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 3 months. While this has boosted sales, but it has tied up significant amount in debtors. Means हमारा पैसा debtors में काफी block हो गया. On the production side, production means cost side. This was all about revenue side. Now we are coming to the cost side. Material consumed 12 lakh and suppliers are giving 2 months credit. Means average payment period is 2 months. Wages 960 and they are saying it is outstanding for 1 month. Cash manufacturing expense is 12 lakh. My question to you, इसमें depreciation included होगा कि नहीं होगा? Cash manufacturing expense, think, इसमें depreciation include होगा कि नहीं होगा? Not included because it is cash expense. Understood? And also this is outstanding for 1 month. Admin expense again outstanding for 1 month and the total admin expense is 3,60,000. Sales promotion 1,20,000, but it is paid monthly, paid in advance. So can I say sales promotion total is 120, but to the extent of 1 month हमारा prepaid होगा तो other current assets में आ जाएगा. ठीक है? So while reading the questions, थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्शियसली सॉल्व करते जाना है. यू शुड आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज कहाँ फॉल होगी फॉर्मेट में. ये आप क्लिक करते जाओ माइंड में. द कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स एट अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 20%. इट ऑल्सो मेंटेन्स अ 2 month स्टॉक ऑफ RM. मीन्स कैन आई से दिस 2 months. अच्छा, GP मार्जिन इज 20%. RM होल्डिंग पीरियड कैन आई से इट इज 2 months. And 2 months stock of FG. So again, FG holding period is 2 months. Further, depreciation is considered as a part of cost of production, but since it does not require cash outflow, management wants to ignore it. Oh, okay. While assessing the cash cost basis of working capital, means यहाँ पे they have directly said कि आपको cash cost basis of working capital, सॉरी, आपका मेथड कौन सा लेना है? कैश कॉस्ट बेसिस. तो जैसे आप ये कैश कॉस्ट बेसिस देखो, आपके माइंड में तुरंत ये क्लिक होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में इंक्लूडेड है तो उसको निकाल दो, एक्सक्लूड दैट. एंड प्रॉफिट डेटर्स विल नॉट बी बेस्ड ऑन सेल्स. डेटर्स को हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेना है. फॉलोड? नाउ माय क्वेश्चन टू, व्हाट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट? अगर क्वेश्चन कुछ मेंशन ही नहीं करता, यू फॉलो कैश कॉस्ट बेसिस और टोटल बेसिस. व्हाट इफ इट इज साइलेंट? व्हाट विल यू डू? आपका ओपिनियन क्या है? आप किस मेथड से सॉल्व करते हैं? टेल मी. गिव नोट. यस. सो अगेन डायरेक्टली दिस शुड नॉट बी योर स्टैंडर्ड आंसर कि we will give a note and we will take any method. No. First check for some hints given in the question. Check for directly नहीं बताया तो कुछ indirect hints का analysis करो. Indirect hints का मतलब क्या? It means कि for example कुछ question में ऐसा बोला होगा कि company wants to present its working capital report in front of the bank for working capital funding. Means company is going to the bank for funding the working capital needs. तो आप सोचो, क्या बैंक आपको डेप्रिसिएशन का फंडिंग देगा? नो. क्या बैंक आपको प्रॉफिट का फंडिंग करके देगा? नो. फंडिंग इज ऑलवेज डन ऑफ योर कॉस्ट. आर यू फॉलोइंग दिस? सो दिस इज एन इनडायरेक्ट हिंट क्वेश्चन इज गिविंग कि आपको कैश कॉस्ट लेना है. सो फाइंड आउट सम इनडायरेक्ट हिंट्स गिवन इन द क्वेश्चन. Still, if the question is silent, then write a note. Followed? So these are some small advices that I would like to give you, and I would say that keep this in mind as far as examinations are concerned. ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने जैसी है. Cash balance is 1 lakh. ठीक है? Now the board of directors has asked the finance team to answer the following 5 questions. What will be the gross working capital on cash cost basis?
Okay, can I say gross working capital is nothing but sum of total current assets? Yes or no? So हम यहाँ पे नंबर ए लिखेंगे करंट असेट्स. आई एम सॉल्विंग दिस एज इफ दिस इज अ वेरी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. ठीक है. सो नंबर वन इन करंट असेट विल बी स्टॉक. Is any information given about WIP? बोलो कहीं पे भी WIP, हाउ मच मंथ्स गुड्स आर इनटू प्रोसेस, कहीं पे भी मेंशन किया हुआ है? Not there, so we have to ignore WIP because WIP holding period is not given in this question. ठीक है. सो हम उसको इग्नोर करेंगे. तो कहने से स्टॉक में अब RM एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न और FG ये दो ही रहेगा. नंबर 2 is my debtors. नंबर 3 कैश बैंक बैलेंस. नंबर 4 प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन है. करेक्ट. सो आई विल राइट प्रीपेड सेल्स प्रमोशन. And can I say total of this 4 is nothing but my gross working capital. ठीक है. So this is all about point number 1, MCQ number 1, gross working capital. हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. सेकेंड, PPW wants to compute its working capital requirement. Now they are asking about net working capital on cash cost basis after assuming margin of 15%. So can I see हमें क्या पूछ रहे? They are asking about the last amount working capital required. तो कहने से हम इसमें से अब करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे. यस और नो? करंट लायबिलिटीज में नंबर 1 वुड बी क्रेडिटर्स. नंबर 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आई गेस यू हैव wages outstanding, manufacturing expense and admin expense outstanding. So outstanding wages आएगा, outstanding manufacturing expenses आएंगे and outstanding admin आएगा. So can I say the amount would be, if we subtract current liability from gross working capital, I will get net working capital. Correct. इसमें अब मैं 15% safety margin add कर दूं. So this is what is asked in MCQ number 2. Working capital required. Followed? As of now, I am just preparing the format. Means I am analyzing कि क्या ढूंढना है क्वेश्चन में. Understood? अब ये सारी details. RM, raw material, we know that it is based on raw material consumption. FG, we know that it is based on COGS. Debtors, we know that it is based on cost of sales. तो ये सारे फिगर्स, ये सारे वैल्यूज, ये सारे वेरिएबल्स मुझे कहां से मिलेंगे? कैन आई से कॉस्ट स्टेटमेंट से मिलेंगे? यस और नो? सो कॉस्ट स्टेटमेंट, वी विल प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट. वी विल स्टार्ट विद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. हाउ मच इज द रॉ मटेरियल कॉस्ट? कैन आई से 12 लाख है. करेक्ट. फिर आता है वेजेस. हाउ मच इज योर वेजेस का अमाउंट? वेजेस इज 9,60,000. फिर आता है कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. वाई कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस? वाई कैश वर्ड पे इतना ध्यान, इतना वेट दे रहा हूं? बिकॉज दे हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस. ठीक है. So in this question they have directly given cash manufacturing expense. अगर सिर्फ manufacturing expense बोला होता तो we would have removed depreciation from it. We would have excluded the depreciation from it. ठीक है. But here they have directly given what we want, 12 lakhs.
So students, can you tell me what is my total cost of production बोलो या COGS बोलो? कितना आ रहा है? 1224 33,60,000, करेक्ट? ये सर नो यही आ रहा है. इसमें हम एडमिन एक्सपेंस ऐड करेंगे. एडमिन एक्सपेंस इज 3,60,000. Admin is 360 and selling expense, sales promotion expense is 1,20,000. Add sales promotion expense 1,20,000. ठीक है. So my total cost of sales. So my total cost of sales comes to how much? 33,60,000 plus 360 means 36, 37, 3840. ये 3840 आया सबका? 3840, yes. 3840, correct? Everyone, let me calculate and check it again. Yeah, so this is my cost of sales. Understood? So now, whatever we want to complete our estimation ka format, we already have now from the cost statement. We have to now just apply the formula. How much is RM? Can I say RM, stock of RM is nothing but raw material consumption, 12 lakh into RM holding period, 2 months. So can I say this comes to 2 lakh? Everyone? Yes or no? FG is based on COGS. So my COGS, okay. Now very important note. Can you tell me what is my COGS? Can you tell me what is my COGS? 3360. Yes. So 33.6 lakh, and again it is outstanding for 2 months. So tell me what is the amount of FG? What is the amount of FG? 5,60,000. Correct? So I'm just checking the solution of institute. 2 lakh raw material, 5,60,000 FG. Debtors. Hey, debtors. This is the cash cost basis. So can I say हम sales amount नहीं, हम cost of sales लेंगे. Cost of sales is 38.4 lakh. And how much is my collection period? 3 months. So tell me what is the amount of my debtors? कितना आ रहा है debtors? कितना है debtors? 38 lakh 40 is my total cost of sales. 38 lakh 40. And average collection period from my debtors is 3 months. 960 आया. So 9,60,000. Next, cash and bank balance directly given. Cash and bank balance कितना रखना है? 1 lakh. 1 lakh is the minimum cash balance to be maintained at all times. So 1 lakh. Sales promotion expense. Can I say sales promotion expense is 120 and they are prepaid for, I guess, 1 month. Yeah, paid 1 month, monthly in advance means 1 month. So कितना है? 10,000. 10K, correct.
So can you all help me in calculating gross working capital? 2 lakh plus 560. 2 lakh plus 560 plus 960 plus 1 lakh 10. 18 lakh 30,000. 18 lakh 30,000. So answer of first question is C. 18 lakh 30,000. ठीक है. Gross working capital done. ये 20 नहीं 30,000. Yeah. 10,000 is prepaid ना, वो मत भूलना. Next, we have to calculate net working capital required after adding margin. So we have already prepared the format. We are ready with the format. Can I say creditors will be based on raw materials? हम creditors से क्या purchase करेंगे? Supplier से क्या purchase करेंगे? Raw materials, which is 12 lakh. And how much is the credit allowed by creditors? हमें कितना credit मिल रहा है? 2 months. यहाँ पे 2 months is the credit given by suppliers to us. So again 2 lakhs. Outstanding wages. Wages amount was, total wages in the entire year was 9 lakh 60. Manufacturing expense. Total manufacturing expense in the entire year was 12 lakh. And admin was 3.6 lakh. All these expenses, can I say, are outstanding for 1 month? सारे एक महीना है देखो. Wages भी 1 month lag. Lag means outstanding. Again, arrears means outstanding. And administration, 1 month lag, again outstanding. So 1 by 12, 1 by 12, 1 by 12. Manufacturing expense would come to 1 lakh. Outstanding manufacturing expense would come to 1 lakh. Wages आएगा 960 into 1 divided by 12. 80,000. Just check yourself as well. And this is 30,000. So can I say my total of current liability comes to 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh 10,000. Total of current liability comes to 4 lakh 10,000. Just check the working. Is it correct? So 1860 में से 4 lakh 10,000. 18 कितना? 1830 था, सॉरी 1830 था माइनस 4 lakh 10. ये 14 lakh 20 आ रहा है मेरा तो नेट. this amount comes to 14 lakh 20. करेक्ट. अब इसमें हम 15% ऐड करेंगे. 15% ऑफ 1420, 2 lakh 13,000. So 1420 plus 2 lakh 13, 16 lakh 33. किसी का 15 lakh कुछ आ रहा था ऑनलाइन पार्टी. बुशरा, हाउ डिड 15 lakh 20 कम? हाँ 14 lakh 20 है. ओके ओके ओके. So final answer, working capital required is 16 lakh 33,000. Just check the option. 16 lakh 33, it is that. नंबर ए. यहाँ पे तो आपको कंफ्यूज नहीं किया है. मैं एक ऑप्शन में 14 lakh 20 देता क्योंकि स्टूडेंट्स आर बाउंड टू डू एरर्स. नेट वर्किंग कैपिटल 1420 आ गया, ये वाला अमाउंट आ गया. सो वुड सी द ऑप्शन. सो मैच हो रहा है, ऑप्शन में भी है. दे वुड सिलेक्ट 1420. दे वुड फॉरगेट एडिंग 15%. सो यहाँ पे तो आपको कंफ्यूज नहीं किया. बट इफ आई वुड बी एन एग्जामिनर और इफ आई वुड हैव सेट दिस क्वेश्चन तो मैं वो ऑप्शन भी देता. Excluding 15% margin, what is the current ratio?
Okay. Current ratio, we know it is nothing but current asset upon current liability. So number one answer is, can I say gross working capital? It was क्या था 18 लाख 30 18 लाख 30 था. Number two, working capital required 16 लाख 33,000. Number three, they are asking current ratio. Current ratio. Can I say it is nothing but simple CA upon CL? CA is 18 लाख 30,000. CL was 4 लाख 10,000. Yes or no? तो कितना आ रहा है? 1830 divided by 4 लाख 10,000. 4.463. 4.463. सबका ये आया आंसर करंट रेशियो. पार्ट सी में थर्ड एमसीक्यू क्या पूछा? एक्सक्लूडिंग द 15% मार्जिन. मीन सेफ्टी मार्जिन हटा दो तो क्या बचेगा? करंट असेट करंट लायबिलिटी. व्हाट इज करंट रेशियो? कैन आई से 4.46:1? अच्छा, जस्ट very quickly, can you interpret and tell me what does this 4.46:1 mean? हमने कैलकुलेशन तो कर दिया, हमें ये एमसीक्यू में आंसर 2 मार्क मिल भी जाएगा, बट इसका इंटरप्रिटेशन, इसका लॉजिक, इसका मतलब क्या? करंट रेशियो 4.46:1. ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, कैन यू ट्राई? क्विक ट्राई. बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय 4.46:1? Solvency ratio, yes, that is current ratio is a part of solvency ratio. It gives you insights about your solvency position or liquidity position. But उसका मतलब क्या एग्जैक्ट? ये जो फिगर स्क्रीन पे दिख रही है, इसका मतलब क्या? It means to pay 1 rupee of current liabilities, my business has 4.46 rupees of current assets. अरे फॉलोइंग, ये आपने रेशियोज में सीखा था ना, एनालिसिस ऑफ रेशियोज और इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज. आवर जॉब एज अ फाइनेंशियल मैनेजर इज नॉट टू सॉल्व दिस रेशियोज. ये तो एनी पर्सन, एनी ग्रेजुएट पर्सन कैन डू. आवर जॉब स्टार्ट्स आफ्टर दैट to interpret and to analyze what does that mean. Are you following? So it means to pay 1 rupee of current liabilities. I have enough assets, so my solvency position is good. Are you getting this? But the industry standard is 2:1. This you have learned or revised in ratios chapter. What is the quick ratio of PPW Limited? So can I say quick ratio is nothing but current assets less stock less prepaid expense अपॉन करंट लायबिलिटीज. ये सर नो, यही फॉर्मूला हमने सीखी थी. सो करंट असेट्स इज 18 लाख 30. उसमें से जो स्टॉक की वैल्यू है ना, स्टॉक वो हमें माइनस करनी है. हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? ये दोनों स्टॉक इंक्लूड होंगे. Stock means RMFG both. So can I say 760 is the value of total stock? And how much is the value of prepaid expense? Can I say it is 10,000? Prepaid था ना? Prepaid sales and promotion. So minus 760 minus 10,000. Current liabilities is 4 lakh 10. So let's just calculate 1830 minus 760 minus 10,000 divided by 4 lakh 10. 2.5854. 2.5854:1. 585. 2.59. C. Answer C. 2.585 means 2.59. ठीक है? So this quick ratio of 2.59:1 means to pay 1 rupee of current liabilities, I have 2.59 rupees of quick assets, means more liquid assets.
Are you getting this? Highly liquid assets. What is number 5? What is the working capital turnover ratio based on cash cost of sales? नंबर 5. नंबर 5 क्या पूछा है? वर्किंग कैपिटल turnover ratio. ठीक है. So ideally the formula of working capital turnover ratio was ideally हमने जो ratios में सीखी है वो क्या थी? सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल. करेक्ट. सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. अंडरस्टूड. बट यहाँ पे क्वेश्चन है स्पेसिफिकली सेट that this ratio has to be based on cash cost of sales. Are you following, students? So instead of sales, here we will take cost of sales. Yes or no? Understood this point? Ideally formula was sales upon working capital required. But यहाँ पे MCQ में क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला है कि टेक ऑन कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो कहना है हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे सी द सोल्यूशन एज वेल. Can you see cash cost of sales 3840? Understood? So 38 lakh 40 divided by 14 lakh 20,000 excluding the margin. ठीक है? Excluding the margin. So 3840 divided by 1420 it comes to 2.7. 38 2.7. सर हमें पता कैसे चला कि हमें मार्जिन एक्सक्लूड करना है? 2.7 करेक्ट. सी अनदर फॉर्मूला इज ऑल्सो करेक्ट ना, ये भी करेक्ट है. कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल required means what is the final amount that you have estimated, this amount. This also you can take in denominator. बट आपको क्या करने का, ऐसे केस में आपको आंसर चेक करने का विच ऑप्शन इज अवेलेबल. So check whether 38.4 divided by 16.33 lakhs. If we do this, is this option available in the solution or in the 4 options? 2.35 आता ही है. क्या 2.35 अवेलेबल है? नहीं है. So we have to exclude. So it means they have calculated. These options are given after excluding margin. Are you following? अंडरस्टूड. सो किसी को ये क्वेश्चन आ सकता है सर हमने नेट मतलब फाइनल हमारा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड था 16,33 वो क्यों नहीं लिया डिनोमिनेटर में? ये वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन है ही नहीं. फॉलोड. सो वी वेंट फॉर द बेस्ट नेक्स्ट ट्रायल. एवरीवन फॉलोड दिस? एनी डाउट्स? एनी कंसर्न्स? आगे बढ़े. So this was about estimation of working capital. Understood? Now let's move to operating cycle. Learning objective number 2. Working capital operating cycle. What do you mean by working capital operating cycle? पहले मुझे आप बताओ आपने क्या समझा है इस कॉन्सेप्ट को. व्हाट इज द ऑपरेटिंग साइकिल अकॉर्डिंग टू यू? टेल मी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स. आई वांट यू टू बी एंगेजिंग एंड रिस्पॉन्सिव. प्लीज पार्टिसिपेट. प्लीज पार्टिसिपेट. बोलो. So that I will get an idea कि आपने क्या समझा and accordingly I will give my explanation. What do you mean by operating cycle, working capital operating cycle? See, operating cycle means operating cycle is a process. Process of what? It is a process of converting
cash. It is a process of converting cash back into कैश. क्या प्रोसेस है? ऑपरेटिंग साइकिल मींस इट इज अ प्रोसेस. ऑपरेटिंग साइकिल एक प्रोसेस है. किसकी प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कैश बैक इनटू कैश. सर 2 बार कैश? यस, क्योंकि 2 बार कैश है. दिस कैश is nothing but the cash that you pay to the supplier for buying raw materials. Are you getting this? So this cash is nothing but the cash. See, आप रॉ मटेरियल खरीदोगे सप्लायर से, ये फ्री में तो नहीं देगा वो. ऑब्वियसली ही विल ask for the money. So this is the cash that you had paid for buying raw material. Are you getting this? So can I say now the cash has taken the form of raw material? Means आज मेरे जेब से कैश गया, सप्लायर के हाथ में गया, और सप्लायर ने कैश के बदले मुझे रॉ मटेरियल दिया. तो कैन आई से माय कैश टुडे हैज टेकन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल? यस और नो? सो माय कैश इज नाउ कन्वर्टेड इनटू रॉ मटेरियल. आर यू गेटिंग दिस? सो कन्वर्जन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया आज से. माय कैश इज नाउ कन्वर्टेड इनटू रॉ मटेरियल. वो रॉ मटेरियल के रूप में आ गया. So raw material after holding for some period, I will enter into process. Yes or no? प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा. प्रोसेस कंप्लीट होने पे FG बनेगा. एंड कैन आई से वंस द FG इज रेडी इन द फैक्ट्री, कस्टमर बाहर लाइन लगा के नहीं खड़ा होगा. आर यू गेटिंग दिस? FG को सेल्स में कन्वर्ट होने में भी टाइम लगेगा. Yes or no? So till that time I will store this FG in my godown or warehouse. So after storing for some time in the warehouse, it will get converted into sales. Means ये goods मैं अपने customers को बेच दूंगा. And can I say customers after enjoying some credit period will pay the cash to me? Yes or no? Are you getting this? So understood the entire process. So आज कैश कन्वर्ट हुआ था रॉ मटेरियल के रूप में, और वही कैश मुझे डेटर्स के रूप में मिल गया. Are you following? So this entire process is called as operating cycle. Everyone followed? And the time taken to complete this cycle, the time taken to complete this cycle or the duration taken to complete this cycle is called as duration of operating cycle. ये पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, उस समय को हम क्या बोलेंगे? ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. द टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस एंटायर साइकिल. एंटायर साइकिल मीन स्टार्टिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड एंडिंग एट रिसीविंग कैश फ्रॉम कस्टमर्स. Everyone, are you understanding the concept with full clarity? आपको conceptual understanding मिल रही है? बोलो. Any doubts, any concerns? So operating cycle simply means a process of converting the cash back into cash. But वो process को जितना समय लगता है कंप्लीट होने में, उस समय को हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. आर यू गेटिंग दिस? सो हाउ टू कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल? इट इज नथिंग बट ग्रॉस ड्यूरेशन. इट इज नथिंग बट ग्रॉस ड्यूरेशन लेस एवरेज पेमेंट पीरियड. जैसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से हम करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं, वैसे ही ग्रॉस ड्यूरेशन में से हम एवरेज पेमेंट पीरियड माइनस करेंगे और नेट ड्यूरेशन मिलेगा. नाउ व्हाट इज ग्रॉस ड्यूरेशन? जैसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वाज सम ऑफ करंट असेट्स,
वैसे ग्रॉस ड्यूरेशन इज नथिंग बट सम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ करंट असेट्स. Are you getting this? Means can I say gross duration is nothing but RM holding period or RM storage period plus WIP holding period or WIP storage period plus FG holding period or FG storage period plus average collection period. Are you following? So gross duration is nothing but sum of these holding periods. Everyone understood? उसमें से हम एवरेज पेमेंट पीरियड माइनस करेंगे तो वी विल गेट नेट ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. फॉलोड एवरीवन? बोलो, एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स? So I hope you are able to recollect the formula of duration of operating cycle. So duration of operating cycle की फॉर्मूला ये है, बट उसका लॉजिक इज दिस. अंडरस्टूड? एनी क्लैरिटी यू वांट? आगे बढ़ू. सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट. सो दिस वाज लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2. ठीक है. Now let's move to learning objective number 3. Receivables management. Receivables management. What was receivables management concept all about? It was all about managing your customers or managing your debtors efficiently. Now efficiently matlab in such a way that your profit, that your net benefit gets maximum. Are you getting this? Receivables management was all about managing your customers efficiently. But efficiently matlab kya? In such a way that it results in deriving, in generating maximum net benefit to you. Are you following? So इस chapter में, or I would say in this receivables management concept, there were further 2 sub-concepts or further 2 sub-topics that we had learned. हम इस चैप्टर में 2 चीजें हमने सीखी थी. वन इज इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट क्रेडिट पॉलिसीज, इवैल्यूएशन ऑफ मल्टीपल क्रेडिट पॉलिसीज एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट वन आउट ऑफ इट. Selecting the best one out of it. Yes or no? Are you following? First was evaluating different multiple credit policies or different alternatives of credit policies and selecting the best one. So if you recollect, let's say, if you are able to recollect, let's say the current existing policy of company is 30 days. ठीक है? Now company is contemplating to increase this 30 days का credit period to either 60 days, to either maybe 75 days, to either maybe 90 days. So company wants to evaluate, क्या 60 days पे कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है? क्या 75 days क्रेडिट करने पे कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है? क्या 90 days की क्रेडिट पॉलिसी करने पे कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है? This evaluation we learned in this chapter. Are you following? Are you able to recollect? Yes or no? Are you getting this? So receivables, can I say receivables are nothing but your debtors. Now debtors का जन्म, debtors का birth कहाँ से होता है? अगर credit sales है तो ही debtors का birth होगा. So receivables are born from credit sales. Are you getting this? So credit sales has its own advantages and has its own limitations. Are you following? Are you able to process what I am trying to say? Our advantages means कुछ फायदे हैं and कुछ limitations है. Limitations means कुछ costs है. Benefit ये है that अगर क्रेडिट सेल्स है तो आपका सेल्स बढ़ेगा,
एंड इन टर्न आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. माई क्वेश्चन टू यू, इफ द करंट, टेल मी, 30 डेज के क्रेडिट पे लेट से सेल्स इज एक्स, तो 60 डेज पे कहना है से वो एक्स अमाउंट से ज्यादा ही होगा, बिकॉज मोर क्रेडिट टू कस्टमर्स, more customers will come and do business with me. Yes or no? So higher the credit period, higher would be the revenue, higher would be the sales, and in turn higher would be the profit. So this is the main benefit from credit sales. But credit sales के साथ कुछ cost आते हैं. Cost is number one, admin cost. Can I say, let's just visualize, there are two companies. One company is doing sales on cash basis and one company is doing business on credit basis. ठीक है, just visualize. So हमने बोला कि ज्यादा कस्टमर्स, हमने तो ये डिसाइड कर लिया कि ज्यादा कस्टमर्स क्रेडिट सेल्स वाले कंपनी के ज्यादा होंगे. द कंपनी दैट इज गिविंग क्रेडिट टू इट्स कस्टमर्स, उसका सेल्स ज्यादा होगा. ठीक है, बट कहना इसे उस कंपनी को एडमिन कॉस्ट ज्यादा इनकर करना पड़ेगा. ये एडमिन कॉस्ट, बाय एडमिन कॉस्ट आई मीन उस कंपनी को स्पेसिफिक कुछ स्टाफ हायर करने पड़ेंगे who would be doing the job of recovery from the customers. Are you getting this? After every 15 days वो स्टाफ मेरे कस्टमर्स को कॉल करेगा कि आपका पेमेंट ड्यू हो रहा है, प्लीज मेक द पेमेंट. ईमेल्स भेजेंगे, आपका पेमेंट ड्यू, योर पेमेंट इज ड्यू इन 5 days, प्लीज मेक द पेमेंट. आर यू गेटिंग दिस? सो क्रेडिट सेल्स है तो मुझे स्पेसिफिक 2 स्टाफ हायर करने पड़ेंगे फॉर स्मूथ रिकवरी ऑफ माई कस्टमर्स, फॉर स्मूथ रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम माई कस्टमर्स. करेक्ट? क्रेडिट सेल्स है तो बैड डेट्स होगा. करेक्ट? कैश सेल्स है तो कोई बैड डेट्स नहीं होगा. बट क्रेडिट सेल्स है, देयर आर चांसेस कि सम ऑफ माय कस्टमर्स वुड नॉट पे टू मी. यस और नो? एंड समवन हैज राइटली सेड कि कलेक्शन एक्सपेंस होंगे इफ क्रेडिट सेल्स है तो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्काउंटिंग एक्सपेंस, डिस्काउंटिंग चार्जेस भी होंगे. लेट्स सी इफ आई गिव, if my normal credit period is 30 days, but if someone is coming on 10th day and making payment to me, तो कहने से उसको मुझे डिस्काउंटिंग देना पड़ेगा. सो क्रेडिट सेल्स है तो आई हैव टू गिव सम डिस्काउंट टू द कस्टमर्स फॉर पेइंग इट अर्ली. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रेडिट सेल्स है तो देयर इज अपॉर्चुनिटी cost of investment in debtors. There is opportunity cost of investment in debtors. इसको इजी टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स, COCD, कॉस्ट ऑफ कैरिंग द डेटर्स. डेटर्स को उठाने का खर्चा. सर डेटर्स को उठाने का खर्चा माने what do you mean by opportunity cost of investment in debtors? Let me explain you. Can I say debtors means आज सेल हो गया, let me prepare a timeline. आज सेल हो गया, उसका कलेक्शन, let's say I am giving a credit of 30 days. सेल ऑन डे 1, कहने से उसका कलेक्शन मुझे 30th डे पे होगा. Yes or no? So for 30 days, my amount will get blocked in the business. Yes or no? And I cannot afford a single amount getting blocked in the business. I cannot afford a single penny to get blocked in the business. तो कहना है 30 days के लिए जो मेरा पैसा ब्लॉक हुआ है, I cannot afford that getting blocked in the business. I have to arrange now from somewhere. Yes or no? मैं कस्टमर को तो बोल नहीं सकता कि आज पेमेंट कर बिकॉज मेरा पैसा ब्लॉक हो चुका है. नो, बिकॉज ऑन अ नॉर्मल बिजनेस टर्म्स आई हैव टू गिव क्रेडिट ऑफ 30 days. So the amount that is blocked in the business or the amount that is blocked in the debtors, can I say I have to arrange
amount blocked in debtors, can I say I have to arrange these funds because I cannot afford getting blocked? So from which sources I can arrange this amount blocked? Can I say I can arrange this either from my own sources, own funds, or from borrowed funds, loan funds, correct? Hey, are you understanding the flow? Are you able to visualize? आज मैंने सेल किया है, उसका पैसा मुझे 30th डे पे मिलेगा, तो 30 दिन तक पैसा ब्लॉक हो रहा है बिजनेस में, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड अ सिंगल पेनी टू गेट ब्लॉक्ड इन द बिजनेस. सो क्या कर सकता हूं मैं? कस्टमर से तो मांग नहीं सकता बिकॉज उसको 30 दिन का क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज अ नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस. अदरवाइज वो मेरे साथ बिजनेस नहीं करेगा, किसी और के साथ करेगा. ठीक है. सो नाउ व्हाट आर द अदर सोर्सेज लेफ्ट फॉर अरेंजिंग दिस ब्लॉक्ड अमाउंट? कहने से आइदर मेरे पास खुद के पास फंड्स होंगे, आई विल इन्वेस्ट फॉर 30 days in my business, or I will arrange it from loan funds. I will borrow it for 30 days from bank, from financial institution and invest in the business. Correct? So can I say loan है तो interest percentage आएगा. Hey, are you following this, everyone? So this interest is nothing but cost of carrying debtors. The interest that you pay for arranging this amount that was blocked for 30 days is nothing but cost of carrying debtors. Followed? And if you are arranging this amount blocked from your own funds, so can I say opportunity cost आएगा? Opportunity cost because ये funds आप कहाँ से arrange करोगे? तो कहीं और इन्वेस्ट किया होगा, वो कहीं और इन्वेस्टमेंट को तोड़ के, वो इन्वेस्टमेंट को सेल करके अब आप बिजनेस में लगाओगे. सो लेट्स से इफ यू आर अरेंजिंग फ्रॉम ओन फंड्स, but these funds were invested in gold or real estate or shares. So can I say अब आप shares बेच के you will arrange for the business. So can I say you are losing an opportunity in alternative investments? Yes or no? So यहाँ पे own fund है तो opportunity cost आएगा. Everyone followed this? So that's why it is called as cost of carrying debtors. Means if it is arranged through loan funds, तो interest आएगा. Interest on the amount that was blocked for 30 days. And if you are arranging from own funds, so can I say you are losing an opportunity of earning from somewhere else? Yes or no? So that opportunity cost is nothing but opportunity cost of due to investment in debtors. Followed, everyone? Any doubts, any concerns, any queries? बोलो. Take 30 seconds and try to digest what is being explained in this class. Take your time and think. क्या आपको समझ रहा है? Can I move forward? Can I move forward? So in short, let's come back to our original scenario. We would be calculating net benefits for different credit policies and we would be selecting the best one. The best one कौन सा होगा जिसमें net benefit सबसे highest होगा? That policy company should go for. And how to calculate net benefit? ये रहा, it is nothing but gross benefit less all this cost. Followed? Followed, everyone? If time permits, we will take one question as well on this topic so that you can reconcile with the explanation in the class. ठीक है? So this was part 1 of receivables management, evaluation of different credit policies and selecting the best one of it. Best one कौन सा होता है? तो जिस क्रेडिट पॉलिसी जो कंपनी को ज्यादा नेट बेनिफिट जनरेट करके दे, कंपनी शुड गो फॉर दैट पॉलिसी. ओ ओके, नेट बेनिफिट जिसमें ज्यादा, वी विल सिलेक्ट दैट.
ओके अंडरस्टूड, बट नेट बेनिफिट मतलब क्या? तो नेट बेनिफिट इज नथिंग बट योर ग्रॉस बेनिफिट in the form of increase in profit minus all the cost, admin, bad debts, collection, discounting, and COCD. So a very good way to remember, it is nothing but A, B, C, D, COCD. A, B, C, D, COCD. Gross benefit minus A, B, C, D, COCD. This is a technique to remember the cost. Admin cost, bad debts cost, collection cost, discounting cost, COCD cost. Followed? So this is a technique to remember what cost generally comes when company does credit sales. Understood? Part 2 of receivables management was factoring. Yes or no? फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट था. बोलो फैक्टर माने क्या? फैक्टर माने क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टरिंग? आपने इस कॉन्सेप्ट को क्या समझा है बताओ. व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टरिंग? इन वेरी सिंपल और लेमन टर्म्स अगर मुझे आपको फैक्टरिंग समझाना हो तो फैक्टरिंग इज नथिंग बट आउटसोर्सिंग of collection process. Outsourcing of collection process. See, doing sales is one thing. हाँ अग्रीड, जितना सेल्स ज्यादा उतना कंपनी का ग्रोथ ज्यादा, उतना कंपनी के लिए फायदा ज्यादा. बट कहने से वो सेल्स से रिकवरी, डेटर से पैसा ही नहीं आ रहा है, तो वो जितना ज्यादा सेल्स कर रहे उसका कोई मतलब नहीं है. डूइंग सेल्स इज गुड, बट अगेन टाइमली रिसिप्ट ऑफ मनी इज इक्वली इंपॉर्टेंट. यस और नो? आप सेल्स करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, सबको माल उधारी पे बेचते ही जा रहे हो, बट नो वन इज repaying you or no one is paying you the amount. So can I say again, it is a very bad sign of your business. Understood? Are you getting this? So now the question arises कि आप उनसे रिकवर क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप सेल तो कर पा रहे हो. So your marketing team is performing good. Your sales and marketing team is doing best from their side. But you are not able to focus on collection process on the collection side. So why you are not able to focus on collection process? Can I say because आप अपने core business operation पे focused हो, आप अपना बिजनेस धंधा बढ़ाने पे फोकस्ड हो, मीन्स द कोर बिजनेस ऑपरेशन उस पे फोकस्ड हो, इसलिए यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द कलेक्शन एस्पेक्ट. अंडरस्टूड? तो फैक्टरिंग सेज कि अग्रीड, आपके पास कलेक्शन के लिए टाइम नहीं है तो पूरा प्रोसेस मुझे आउटसोर्स कर दो, आपके बिहाफ पे मैं कलेक्शन करके दूंगा, आप अपने कोर बिजनेस पे, कोर धंधे में आप ध्यान दो. यू वांट टू फोकस ऑन दैट, focus on that only. But collection aspect, which is equally important, outsource to us. We will do collection on your behalf. Are you getting this? But can I say factoring will not give this service free of cost. वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. फैक्टरिंग इज नॉट सम फाउंडेशन और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. दे आर देयर फॉर बिजनेस, दे आर बिजनेस. सो कैन आई से दे विल चार्ज सम फीस from my company. Fees for what? Fees for providing collection service to me. Are you following? So that is called as factoring commission or factoring cost or factoring fees. Yes or no? अच्छा, apart from this collection process, factor क्या बोलता है? Factor, see, ideally factor is nothing but a financial institution only. Factor is nothing but your bank only. This factoring service is generally given by financial institutions. Bank वगैरह ही देते हैं. So there are two types of factoring services. One is just providing collection service to you.
But some factors also provide advances to you. Also, they grant advances to you. A grant advances to you means ये जो हमारा अमाउंट जो ब्लॉक हो रहा है ना डेटर्स में, वो अमाउंट ब्लॉक का फंडिंग फैक्टर करके देते हैं. Are you following? So factoring involves two types of services. One is just providing the collection service in return of factoring commission and factoring fees. But some factors not only provide collection service, but they also grant advances for the amount blocked in the debtors. Are you following? So कहने से अगर फैक्टर हमें एडवांसेस भी ग्रांट कर रहा है तो मुफ्त में तो नहीं करेगा. They will charge interest on these advances. Yes or no? So if factoring is granting advances to you, then there would be one additional cost in the form of interest on advance granted or advance paid. Are you understanding the concept, everyone? Are you able to recollect what you have learned? So factoring, factor means a financial institution. अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या सर्विस देंगे? तो दे विल आइदर प्रोवाइड सर्विस ऑफ कलेक्शन प्रोसेस in return of this factoring fees and factoring commission, or some factors also additionally grant you the advance for the amount that you need that is blocked in the business in return of interest on advances. Understood, everyone? Correct? So this was all about receivables management. Now let's quickly take one problem on receivables management from your module and just solve that, so that आपका वो कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो जाए और आपको याद आने लगे कि हम क्या करते थे. स्टडी मटेरियल इंटरमीडिएट इंग्लिश May 26, FM मॉड्यूल 2 में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है. अंडर दैट मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स. So when I say this entire format, if we quickly revise, this entire format is nothing but net benefit ka format. Net benefit is nothing but increase in sales minus all the cost, admin, bad debts, discount, and opportunity cost of investment is nothing but COCD. Are you following this? Are you following this? Can I say gross benefit is increase in sales? इंक्रीज इन सेल्स से कहने से प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा. सो क्रेडिट सेल्स में से इफ आई सब्ट्रैक्ट, सो द फॉर्मेट इज समथिंग लाइक दिस. द फॉर्मेट दैट यू आर सीइंग ओवर हियर ना, in a simplified version, if I want to explain this format, it is something like this. See here, current policy, policy 1, policy A बोलो, 1 बोलो, 2 बोलो या 3 बोलो. Can I say net benefit is nothing but gross benefit minus cost? ग्रॉस बेनिफिट क्या था? सेल्स, हायर सेल्स. तो यहाँ पे हम सेल्स लिखेंगे. हायर सेल्स will in turn result in higher operating profit. Yes or no? So can I say operating profit? To calculate operating profit, the format is sales less variable cost will give me contribution, less fixed cost will give me operating profit. Correct? Understood? So ये gross benefit हो गया. Gross benefit is nothing but higher sales and in turn generating higher operating profit. Now we subtract all the cost. A, B, C, D, C, O, C, D. A for admin. In FM, A is A for admin. B for bad debts. C for collection. D for discounting.
Yes or no? Discounting charges. And last but not the least, COCD, cost of carrying debtors or opportunity cost of investment in debtors. Both are interchangeably used. Na? ठीक है? So the resultant figure, if we subtract all this cost, A, B, C, D, C, O, C, D from operating profit, I will get net benefits before tax. इसमें से टैक्स माइनस करूंगा तो आई विल गेट नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स. अंडरस्टूड एवरीवन? एंड ये जो भी पॉलिसी में सबसे ज्यादा आएगा वी विल गो फॉर दैट पॉलिसी. अंडरस्टूड? So this is the simplified version of the format that you see over here. Are you getting this? Everyone? आपका ये आंसर सेम ही आएगा. लास्ट में जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है? So यहाँ पे let's say 1 plus 4 is also equal to 5 and 2 plus 3 is also equal to 5. So they would have done 1 plus 4. But this format is doing 2 plus 3. Are you following? Answer 5 ही आएगा. And your advice also will not change. So let's just quickly solve this question number 13 will take some time. Let's see, 14 छोटा है. Okay, let's solve question 13. XYZ is considering relaxing its present credit policy and is in the process of evaluating two proposed policy. Means present hai policy 1, policy 2. Current sales is annual credit sales is 50 lakhs. Accounts receivable turnover ratio is 4 times a year. Accounts receivable ratio is 4 times a year. Firm is required, bad debts, current level of bad debts loss is 1 lakh 50. Firm is required to give a return of 25% on investment in accounts receivable. Can I say this is nothing but opportunity cost of investment in debtors? Okay. So my COCD rate over here or investment opportunity cost rate is 25%. Variable cost are 70% of the selling price. Followed? Given below, identify which is better option. Okay. So see how I approach the format. So यहाँ पे दो पॉलिसी है, पॉलिसी 1 एंड पॉलिसी 2. ठीक है? So let's start. Average collection period. Let's start our giving. What is the sales under current policy? 50 lakh. Policy 1 में 60 lakh and policy 2 में 67 lakh 50. So 50 lakh, 67 lakh, 67 lakh 50,000. Variable cost, they have said that it is 70% of sales. So can I say contribution would be 30%? So tell me directly, what is the contribution amount? Can I say 15 lakh? Yes or no? 67 lakh into 30%. 20 lakh 10,000 and 67.5 lakh into 30%. 20.25 means 20 lakh 25,000. Correct? Is any information given on fixed cost? Any information given about fixed cost in the question? No information is given about fixed cost. So we will ignore it. Policy 2 is 60 lakh. Oh, sorry. It is 60 lakh.
67 lakh मैंने कहा देखा, ओके 60 lakhs, so this will be 18 lakhs. 18 lakhs. बोलो, is any information on fixed cost given in the question? No, it is not given, so we have to ignore. Ignore means nil, take it as nil for the purpose of our calculation. सर बोला है ना सर, वेरिएबल कॉस्ट इज 70%, तो फिक्स्ड कॉस्ट वुड बी 30%. इफ यू आर अज्यूमिंग दिस लॉजिक, तो कहना है से ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब जगह जीरो ही आएगा, विच इज वेरी इलॉजिकल. मीन्स कभी इफ वेरिएबल कॉस्ट एट 70% is nothing but fixed cost at 30%. Do you think is this a correct logic? क्वेश्चन में बोला वेरिएबल इज 30, तो सर फिक्स्ड कॉस्ट 30% है, तो कभी भी कोई फॉर्म में ये प्रॉफिट जीरो ही होगा, कभी भी प्रॉफिट अमाउंट आएगा ही नहीं. सो दैट इज अ वेरी एब्सर्ड अजम्पशन. ठीक है. एडमिन कॉस्ट गिवन इन द क्वेश्चन? नो एडमिन कॉस्ट इज गिवन, सो नील. Bad debts is given. How much is bad debts? Current bad debts is 150. For policy 1, the bad debt is 3 lakh and 450. 3 lakh and 450. ठीक है. Collection cost is not given, so take it as nil. Again, discounting is not given, take it as nil. ठीक है. Now, very important part. How to calculate the amount of COCD or the opportunity cost of investment in debtors. This is very important. This is where students do mistake, and this is the tricky part of this chapter. So we will prepare always. I would always advise students to calculate COCD or opportunity cost using working note to avoid any even a small chances of error. ठीक है. So working note, calculation of opportunity cost of investment in डेटर्स. ठीक है. तो सीओसीडी कैलकुलेट करने के लिए नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट्स हियर. आई नो यू हैव ऑलरेडी लर्न एंड you would be knowing this as well, but a very simple way to understand this is COCD involves 2 steps. Step 1, calculate debtors, calculate the amount blocked in debtors. So how to calculate the amount blocked in debtors? Can I say under current policy? How, now tell me, how will we calculate the amount blocked in debtors? Can I say my amount blocked in debtors is over here 50 lakhs, 60 lakhs, 67 lakh 50,000. Yes or no? How much is the amount blocked in debtors? Can I say it is 50 lakhs into average collection period? Yes or no? How do we calculate debtors? It is nothing but sales into average collection period divided by 12, 365, 52. अभी हमने ऊपर फॉर्मेट में सीखा था. बट क्या सेल्स में मेरा अमाउंट ब्लॉक्ड है? नो, बिकॉज सेल्स इंक्लूड्स प्रॉफिट एज वेल. आर यू गेटिंग दिस? सो हमने देखा कैश कॉस्ट is the actual amount. Cash cost of sales is the actual amount that is blocked in debtors. Yeah, are you following this? So can I say यहाँ पे मुझे cost of sales लेना पड़ेगा to calculate debtors? Is everyone following? Students, online participants. Step 1 is to simply calculate debtors. तो हम debtors कैसे calculate करते हैं? It is nothing but sales into average collection period. बट यहाँ पे हमें एक्चुअल अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर्स चाहिए. तो कहना है सेल्स इज नॉट माय अमाउंट ब्लॉक्ड,
बिकॉज सेल्स में तो कॉस्ट एलिमेंट भी है, प्रॉफिट भी है. सो प्रॉफिट इज नॉट द अमाउंट ब्लॉक. वी आर कंसर्न विद द cost because amount blocked in debtors is the cost of sales. Following? So cost of sales into average collection period divided by 12 in 365.52. Correct? So can you tell me what is the cost of sales in the present question for all the three policies? So cost of sales is 35 lakh for current policy. Cost of sales is 42 lakh for policy 1 and cost of sales for policy 2 is 6750 into 70%, 47 lakh 25,000. Are you getting this, everyone? Yes, without formula also you can directly write in the exam. Since I was revising you the concept, that's why I've written the exam. But cost of sales, अगर मान लो fixed cost भी यहाँ पे होता, let's say fixed cost 5 lakh होता, तो करंट पॉलिसी में मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स वुड बी 35 प्लस 5 lakh. Are you getting this? Fixed cost would have remained constant for all the policies. So cost of sales for policy 1 would be 42 plus 5. And likewise for policy 2, it would have been 4725 plus 5 lakh. Followed everyone? But here there is no fixed cost. So our cost of sales would be just variable cost. Understood? So current policy 1, policy 2. My cost of sales is 35, 42 and 4725. So can I say 35 lakh, 42 lakh and 47 lakh 25,000. Correct? How much is my average collection period? Read the question and tell me. Read the question carefully and tell me how much is my average collection period. Sir, दिया है ना accounts receivable turnover ratio. 4 times means 4 months. Sir, average collection period is 4 months. Sir, for policy 1, turnover ratio, accounts receivable turnover ratio is 3 times means 3 months. Is this correct? Is your average collection period 4 months, 3 months and 2.4 months? Tell me. No, this is turnover ratio. So to calculate collection period, can I say the formula that we have learned in ratios is 12 divided by turnover ratio? Are you getting this? फॉर्मूला क्या बनती थी टर्न एवरेज कलेक्शन पीरियड की? कैन आई से एवरेज कलेक्शन पीरियड? इट इज नथिंग बट 12 divided by turnover ratio. So for current policy, it is 12 divided by 4, which comes to 3 months. For policy 1, it is 12 divided by 3 times, which is nothing but 4 months. And 12 divided by 2.4 times, which is nothing but 5 months. Are you following this? Understood how to calculate average collection period? This you have already learned in ratios. Huh? It is nothing but 12 divided by turnover or 365 divided by turnover. Answer would be in days. 52 divided by turnover. Answer would be in weeks. So can I say this is nothing but average collection period is 3 months, 4 months and 5 months divided by 12. So can you tell me what is the amount of debtors under current policy? 35 into 3 divided by 12. Can I say it is 8.75 lakh? 42 into 4 divided by 12. 14 lakh. 47.25 into 5 divided by 12. 19.6875 lakh. ये सबका यही आ रहा है. Everyone is getting this. Please check.
47.25 into 5 divided by 12. Yes, यही आ रहा है. So when I say first step is done, I had calculated, I found the amount that is blocked in debtors for each of the policies, correct? Now move to step 2. Step 2, can I say I will pay interest on this amount? Step 2, apply ROI percentage on debtors value calculated in step 1. ठीक है? So current policy 1, policy 2. My current value, my amount blocked in the debtors under current policy is 8.75 lakh. Under policy 1, amount blocked is 14 lakh. And under policy 2 is 19.6875 lakh. And if we apply the rate of 25% per annum to this value, I will get my amount of COCD. So calculation of COCD involves 2 steps. 2.1875 lakh, 3.5 lakh, 19.6875 into 25, 4.9213 lakhs. So this is the amount of interest that I have to bear for the entire year. Are you getting this? This is the amount that I have to bear in the form of interest for the entire year. Understood? So ये आया था 2.1875 lakh, ये 3.5 lakh, and ये आया था 4.9213 lakhs. Followed everyone? So I will get net benefit before tax. So net benefit before tax is nothing but 15 lakh minus 1 lakh 50 minus 2 lakh 18,750. So I have written in absolute numbers, तो मैं यहाँ पे absolutely लिखूंगा 218,750, 3.5 लाख and 49218 into 492,188. ठीक है? So the resultant amount is your net benefit. Followed everyone? So they go 218,750 is the amount of COCD, which is nothing but opportunity cost of investment in debtors, 350 and 490 to 150. Followed आपका net benefit यही आएगा लास्ट में. And of this, which is the highest benefit giving policy? Can I say policy 1 is that policy which is generating maximum net benefit? So company should go for policy 1. Understood everyone? Tax nahi hai, so we will ignore in this question. No tax given. So this is just net benefits. Understood? Receivables management. Any doubts? Now let's move to quickly revise cash and treasury management. We will not be able to take any practical problem on this, but we will revise the concepts that were covered in these topics. So cash and treasury management also included 2 topics. One is preparing cash budget, and one was calculation of optimum cash balance. Yes or no? Cash budget means, let's say you are working as a financial manager in some blue chip company, and CFO of your company, you are reporting to CFO, and CFO of your company has asked you कि
आने वाले मार्च में, मीन्स मार्च 26 के एंड पे, what would be my cash and bank balance amount? This is the question he has asked. Then what would be your reply? Tell me. आप उसको क्या जवाब दोगे? सर मैं आज 8 दिसंबर तक का कैश बैंक बैलेंस दे सकता हूं, बट फ्यूचर का मैं नहीं दे सकता। फ्यूचर का मुझे क्या पता हमारे कंपनी में क्या होने वाला है आने वाले 3 महीने में, फ्रॉम 9th December till 31st March. I am not aware what transactions will be happening in our company. So first provide me those details. First provide me those future data. And after that, I can give you what would be the likely cash and bank balance. Are you getting this? Again, I'm not sure कि इतना ही बैलेंस होगा, but based on the data that you provide, based on the facts and figures that you provide, I can give you the estimate amount of cash and bank balance that will be there in our business on 31st March. Are you getting this? Understood? So ये कैश बजट बनाते क्यों है? So that हमें आइडिया आए, the company can track where it can invest in the future, because investment would need cash, would need capital. So if company, let's say if company अप्रैल में it is planning that बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है, कंपनी इज प्लानिंग टुडे कि अप्रैल आने वाले नए साल में बहुत ही बड़े ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, सो फॉर दैट आई वुड नीड फंड्स, फॉर दैट आई वुड नीड कैपिटल। तो 31st मार्च के दिन क्या बैलेंस है वो तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा, वो तो एस्टिमेट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पस वी प्रिपेयर कैश बजट। आर यू फॉलोइंग एवरीवन? सो दैट यू कैन एस्टिमेट अबाउट योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अच्छा, फ्यूचर में अप्रैल में आपको यू आर प्लानिंग कि इस बार सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बोनंजा देना है। I want to make all the shareholders very happy and I am planning to give a dividend bonanza. So for that also we need the closing cash and bank balance कि कितना हो सकता है। Are you following? And based on that we can decide कि कितना dividend दे सकते हैं। Are you able to reconcile? Are you able to process what I am trying to say? So that's why we prepare cash budget. Second topic that we had learned in this chapter was optimum cash balance. Optimum cash balance means at any given point in time मेरे कंपनी में कितना कैश एंड बैंक बैलेंस होना चाहिए। Are you following this? At any given point in time, how much minimum cash and bank balance the company should keep? That is optimum cash balance. Are you getting this? Because can I say keeping so much of higher cash, keeping high cash bank balance means you are losing an opportunity of investment. आप अपने कंपनी के बैंक अकाउंट में ज्यादा कैश बैंक बैलेंस रख रहे हो, means can I say you are losing an opportunity of investment in some lucrative projects. कुछ अच्छा बिजनेस, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोडक्ट है ध्यान में, बट आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर कीपिंग इट आइडल इन योर बैंक अकाउंट और इन योर ड्रॉअर, इन योर लॉकर. एंड कैन आई से अगेन कीपिंग अ वेरी लो कैश बैंक बैलेंस, अगेन it is disadvantageous for your company. Why? Because कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई जो तुरंत ग्रैब करनी हो, but you are not having the funds for it. So you will be losing to grab that opportunity available with you. So it is always better to keep some optimum cash balance, not too high, not too low, some average, some optimum cash balance. Now, what would be that optimum cash balance? So William Baumol has given his model, has given his formula that company should not keep too much high cash balance, and on the other side it should also not keep a very low cash balance. It should keep an optimum cash balance. So optimum cash balance क्या होता है? So it is just like your William Baumol model of EOQ. EOQ,
मटेरियल कॉस्टिंग, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. याद है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता था? You will not order very high amount of inventory from your supplier. On the other side, you will also not keep a very low stock of inventory. Your order quantity should be in such a way that your cost is minimum. Are you following, students? So यहाँ पे भी optimum cash balance is that cash balance where your cost is minimum. Understood? So William Baumol model has given his formula. EOQ में क्या था? 2AO upon C the whole square root. Correct? This was the formula of economic or the optimum order quantity of inventory. Correct? So यहाँ पे भी optimum cash balance की formula given by William Baumol is 2AT upon I whole square root. T is the transaction cost. And I is the interest or the opportunity cost or ROI. ठीक है? So the amount that you get after applying this formula is the optimum cash balance. Means let's say it comes to 75,000. So आपको at any given point in time आपके पास cash and bank balance 75,000 होना चाहिए. This is what William Baumol is trying to explain through his model. Are you following? So you shall not keep 3,75,000 in your cash and bank balance. Or on the other side, you should also not keep 10,000 as your cash and bank balance. The optimum point is 75,000. So 75,000 पे आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिनिमम होगा. आर यू फॉलोइंग दिस? दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. एवरीवन. एंड नेक्स्ट वाज, so under optimum cash balance we had two models. One was William Baumol and another was Miller-Orr model. Miller-Orr cash management model. What did Miller and Orr said? Miller-Orr model said कि आप है ना एक रेंज डिसाइड कर लो एज अ कंपनी based on your past trends, based on your future requirements, based on your past analysis, derive a range of high range and low range of cash. Means आपको maximum कितना कैश लगेगा एंड लोएस्ट मिनिमम लेवल ऑफ कैश कितना लगेगा. डिराइव अ रेंज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंस. ठीक है? So your optimum cash balance should fluctuate between these two range only. Are you getting this? ये maximum के ऊपर नहीं जाना चाहिए और ये minimum के नीचे नहीं जाना चाहिए. It should flow between the maximum range and minimum range. High range and lower range दोनों के बीच ही होना चाहिए. So let's say company has kept a maximum range of 1 lakh and minimum range of 40,000. So your cash and bank balance at any given point in time should be between 40,000 and 1 lakh only. Are you following? If it is going above 1 lakh, so excess cash you invest somewhere else. Are you following? Either in some other securities or either in some other business, either in some gold, real estate, kuch bhi. Are you following this? And if the cash balance is going this minimum point, below this minimum lowest point, तो मिलर और सेस कि आपने कहीं और पे इन्वेस्ट करके रखा है ना ये कैश, वहां से बेच के अब वापस कंपनी का कैश बैंक बैलेंस बढ़ा दो. Are you following? Just sell those securities, just sell those investments and bring the cash back to the company. If it is going above the maximum point, take the cash out from the company and invest somewhere else. Are you following this? So Miller-Orr model says कि fix a lower range and fix a higher range according to your past trends, according to your past analysis, according to your past requirements, future requirements. Based on that, fix a point. Higher point kitna, lower point kitna. Your cash balance at any point in time should flow
between these two ranges. Followed everyone? So this was about cash and treasury management. Any doubts, any concerns, students? Bolo, any doubts? Can we move to last topic, which is payables management? Any doubts? We still have 10 minutes, so let me just quickly revise, quickly go through the concept of payables management. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है प्लीज रिस्पॉन्ड प्लीज बी क्विक इन योर रिस्पॉन्स no doubt okay so let's move to payable management now let me explain you the concept of payable or let not explain but quickly revise the concept of payable management through an example only. So come to illustration number 17 of your module of payables management. पेबल मैनेजमेंट में हमें क्या इवेल्युएट करना है एक ही चीज इवेल्युएट करनी है वेदर कंपनी शुड अवेल द कैश डिस्काउंट गिवन बाय सप्लायर और रिफ्यूज द डिस्काउंट गिवन बाय सप्लायर कंपनी के फायदे में कौन सा क्या है व्हाट इज मोर एडवांटेजियस फॉर द कंपनीज पर्सपेक्टिव what is more beneficial from company's perspective whether to avail the discount and pay early to the supplier whether to avail the discount and pay early to the supplier or refuse the cash discount and pay on the due date. Are you following this? We have to evaluate under payables management. Okay? So let's just quickly go through illustration 17. Suppose ABC Limited has been offered credit terms from its major supplier 2 by 10 net 45. 2 by 10 net 45. What do you mean by this terminology? I hope you are aware. What do 2 by 10 net 45 mean? You are aware of these terms? Yes or no? 2 by 10 net 45 means the normal credit period is 45 days. But if I pay early and if I pay within 10 days, then supplier will give me 2% discount. Are you following? The normal credit period means the due date is 45th day. But if you make payment within 10 days or on 10th day, you will get 2% discount. Yes or no? So can I say under scenario 1, I would be paying on 10th day and under scenario 2, I would be paying on 45th day because I am refusing the discount. Correct? Yes or no? So now again to the question. So hence the company has the choice of paying what? Hence the company has a choice of paying 100 per 100. Yeah? This is not 10 per 100. This is an error. Or to invest 98 for additional 35 days. Understood? Okay. So now let's see. Let's assume you purchase goods worth rupees 1 lakh from supplier. Okay. And your ROI, return from investment from outside is 25%. Okay. Evaluate whether to avail the discount or not.
ठीक है, आपने 1 लाख का गुड्स खरीदा है, द टर्म्स आर 2/10 नेट 45, your ROI from outside, that is from investing somewhere else, is 25%. So evaluate, क्या मुझे सप्लायर से डिस्काउंट लेना चाहिए कि नहीं. So if I avail the discount, can I say I would be making the payment on the 10th day? Yes or no? So payment to creditors 10th day पे होगा. Are you getting this? But 1 लाख नहीं होगा, 1 लाख में से 2% माइनस करके होगा. Yes or no? Because I am availing the discount. And the terms are 2/10 net 45. So can I say I would be paying 98,000 to the creditors on the 10th day? Bolo, any doubt still here? Students, any doubt still here? Any queries? Please now be quick in response, because ये नहीं समझेगा तो आगे नहीं समझेगा. And we have very less time, limited time. No, okay. And if we refuse the discount, means I'm saying कि नहीं मैं तुझे 10th day पे नहीं, मैं तो 45th day पे ही दूंगा. So supplier will say, okay, pay me 1 lakh. So can I say in this case, I have to pay 1 lakh if I refuse the discount? Yes or no? So this is 1 lakh minus 2%. But if I refuse the discount, 1 lakh minus 0%. But the catch is over here. Can I say if I avail the discount, I have to pay on 10th day. But if I refuse the discount, I would be making the payment on 45th day. Yes or no? So can I say if I refuse the discount, मुझे additional 35 days मिल गए वो पैसा यूज करने के लिए. I can use this money more for 35 days if it is with me. Yes or no? Are you getting this? मैं एडिशनल 35 डेज तक ये पैसा यूज कर सकता हूं, बिकॉज अब मुझे 10वें दिन पे नहीं 45th डे पे पेमेंट करना है. सो आई कैन यूज द फंड फॉर एक्स्ट्रा 35 डेज. एंड वो एक्स्ट्रा 35 डेज के for that extra 35 days, I will invest this 1 lakh outside at 25%. Are you following? ये कहना है I can use means मैं वो आइडल तो नहीं रखूंगा ना अपने पास, मैं वो कहीं और 35 दिन के लिए इन्वेस्ट करूंगा. एंड कहीं और इन्वेस्ट करने पे मुझे 25% रिटर्न मिलेगा. सो कैन आई से रिटर्न जनरेटेड at 25% for using 1 lakh for 35 days. कितना आएगा? कहना है 1 lakh पे I would be earning 25% for 35 days. कितना आया? कैलकुलेट करो. 1 lakh, I will not keep it idle with me. I will invest 1 lakh at 25% for 35 days. So it comes to 2397. So कहने से मुझे 2397.26 का फायदा होगा. Yes or no? Are you getting this? So if I refuse the discount, I have to pay 1 lakh. So मेरे जेब से 1 lakh जाएगा. But सामने can I say I got some return from investment from outside? Are you getting this? जो फर्स्ट केस में नहीं था बट सेकेंड केस में था 2397.26. सो व्हाट इज माय नेट आउटफ्लो फ्रॉम माय पॉकेट? कैन आई से 1 lakh minus 2397? 97,603. So if I refuse the discount, my net outflow from the pocket is 97,603. Are you following everyone? And if I avail the discount, my net outflow is 98,000. तो बोलो डिस्काउंट लेना चाहिए कि रिफ्यूज करना चाहिए? ऑब्वियसली रिफ्यूज करना चाहिए. अंडरस्टूड हाउ टू इवेल्युएट whether to avail the discount or not, how to analyze. So this was all about payables management. So today's session, it was about 2.5 hours, but we had loads of topic to be covered. Are you getting this? पूरा working capital management revise करना था.
And we learned about how to estimate. We learned about working capital operating cycle. We learned about evaluation of different credit policies to customers and selecting the best one. We learned about the concept of factoring. We learned about the concept of cash budget. We learned about the optimum cash management models. And lastly, we learned about payables management. Okay? So in this short period of time, we had revised all the concepts with full clarity, although we had limited time for practical problems. So with this, thanks for the participant, and I hope this session had added a value in your FM life. Thanks to all the participants. Thank you, technical team. Thank you, support team. I'm ending the session. Yeah, welcome, Pooja. अंकित जी Recording stopped.